When was the notice issued? सर पहला नोटिस इसमें अगस्त एंड में दिया गया था और नहीं, दूसरा नोटिस अगस्त एंड मतलब डेट होगी ना, आप फाइल लेके बैठे हैं। सर इसमें जो हमारा ऑर्डर है इसमें 16(2) कहता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मासिक आवंटन की 10% से अधिक मात्रा के संबंध में खंड 13 के अधीन उल्लंघन होता है। If you don't agree, you will be required to file a detailed affidavit, and if the court is not satisfied, we'll impose heavy cost. Yes, madam. गुड मॉर्निंग लॉर्डशिप, निधि हाँ, भारद्वाज हियर, जी एसडीएम जी, एम आई ऑडिबल सर? yes yes. Whether you have complied clause 16(8) of the control order 2015 before passing the impugn order. Sir, I have taken the duly information from both the SDMs and the JSO that were हाँ, present in 2023. In this particular case, there was a show cause notice given to the party 1 month in which they have not given any order because we wanted to continue the distribution. So I have given that shop to another, attached the shop to one. Now in this 1 month duration, there was no reply filed. And at the same time, the collector sir, that present DM sir also went to the field. And he has found out that many people has given him, they have given with the complaints that there was no distribution whatsoever in this case. So again, the letter was given on 3 October. They have complied with the show cause notice. The person has seen it. Still, there was no reply. So in that regard, this second order was passed. And if we see the Control Act, in that also it is written that if there is 10%, more than 10% of degeneration distribution, we should go for the such penalty. hey, but the only question is whether you have taken an opinion Sir, which is required under 16(8). Sir, we have seen all the files. We do not have any written orders, but there was oral orders and The DM sir. oral orders will not suffice. It. What does 16(8) says? If I may read Yes, yes. Please read. Please read. 16(8) says, on finding any irregularity in operation of a fair price shop, if it is expedient in the opinion of collector, prosecution against the chairman or head of society, salesperson, employee of institution may be initiated. Yes. It is very clear from the statute that the opinion of collector is must before passing of any such order. Yes. As passed by the impugn order law. Yes, madam. The opinion of the collector was present, but it is not in written format. It is in oral format, sir. ये oral से कैसे पता करेंगे? How can we assume that it is an the clause says that it has to, the opinion should be in writing. Oral लिखा है क्या उसमें कहीं? सर ओरल इट इज नॉट रिटन, इट इज इन कलेक्टर की राय में हमको उसको हो सर जो राय में तो राय कहाँ है? सर जो क्लॉज 3 है File an affidavit to this effect, my lord. Can you file an affidavit of the collector that he has complied with 16(8)? We'll file a short reply. That you have complied with 16(8). सर इसमें अगर हम ऑर्डर 16(3) देखें, इसी कंट्रोल ऑर्डर, तो 16(3) सेज कि यदि किसी उचित मूल्य दुकान में निलंबन की दशा में उचित मूल्य आवंटन प्राधिकारी 10 दिवस की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. सर आई हैव द ऑर्डर इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू कंप्लाई इन द हिंदी लैंग्वेज. यस यस. सर इसमें जो हमारा ऑर्डर है इसमें 16(2) कहता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मासिक आवंटन की 10% से अधिक मात्रा के संबंध में खंड 13 के अधीन उल्लंघन होता है तो उसकी पुनरावृत्ति भी होती है, जैसा मुझे फाइल्स में मिला है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाएगी. उसके आगे पढ़िए. 16(3) कहता है सर कि किसी उचित मूल्य दुकान की दशा में उचित मूल्य दुकान आवंटन प्राधिकारी 10 दिवस की अवधि के भीतर संबंधित उचित मूल्य दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जो किया गया था, और यथासंभव 3 माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा. So when was the notice issued? सर पहला नोटिस इसमें अगस्त एंड में दिया गया था और दूसरा नोटिस अगस्त एंड मतलब डेट होगी ना, आप फाइल लेके बैठे हैं. जी सर. सर 25/9/2023 को एसडीएम महोदय द्वारा आदेश 25/9/2023 को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था. हाँ, उसके बाद इससे उसका पूर्व जो जेएसओ, हाँ ठीक है, क्लॉज 4 निकालो. उचित मूल्य की दुकान आवंटन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए युक्त अवसर देने के पश्चात और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उसके कारण का उल्लेख करते हुए दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सकेगा. जी सर. ठीक है, दिस इज फॉर द शॉप. उसके बाद आगे पढ़िए 5.
दुकान आवंटन प्राधिकारी फिर उचित उसमें मूल्य की परंतु भी प्रोवाइजो भी है उसमें 4 में, हाँ, परंतु अ, उचित मूल्य दुकान आवंटन प्राधिकारी अपील के अंतिम निराकरण तक किसी नई संस्था को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन नहीं करेगा। when was the Allot- order passed under 16(4)? सर इसमें दुकान को सर अटैच किया गया था, इमीडिएटली किया गया था क्योंकि वितरण नहीं हो पा रहा था सर। This Yeah, itself is this itself is contrary to what she just read, Lordship. Yes. Why, when Sir, you have issued a show cause notice on 25/9/23, you can wait जी for 3 months and then you can proceed against the shop under clause 4. सर हमारी संस्था सेम ही है, जो प्राधिकृत संस्था थी कृषि साख तो आपने सोसाइटी। निरस्त क्यों नहीं किया क्लॉज 4 में? सर क्लॉज 4 में क्योंकि सर हमारी संस्था वही है, हमने वसूली लगाई थी, संस्था वही थी, संस्था के द्वारा संचालित जो दूसरे विक्रेता थे उनको हमने दुकान दी। नहीं तो हमने सिर्फ where you वो कहाँ से मिलेगा आपको, पावर कहाँ से है उसको अटैच करने का? उसको तो क्लॉज में रीड करना पड़ेगा ना. It has to be read in as per the provisions which have been spelled out under the control order. My lord, we may file a detailed reply to this effect, my lord. Answering all जो the आपकी queries of कार्रवाई हुई है किस प्रोविजन में हुई है, आपको इसी से चलना पड़ेगा ना. When you have issued a show cause notice under clause 3 16(3), then you have to proceed under clause 16(4). अब आपने क्या किया है? इन्होंने लॉर्डशिप सीधे ऑर्डर पास कर दिया. दैट टू दो ऑर्डर पास की. एक वन वाज द ओरिजिनल ऑर्डर व्हिच वाज पास ऑन 26/10/23 एंड ऑन द सेम डे अमेंडेड ऑर्डर हैज बीन पास. On the last date of hearing, my lordship ठीक है, has इसमें इनका स्पेसिफिक एफिडेविट मंगा देते हैं. सर and if for the convenience of my lordship, I may read the judgment which I have annexed with my compilation, page number 15, lordship, for a moment. If, P3. P3, lordship. Yes. P3, page number 15. Para Yes. 5, I am reading, lordship. In a case of Jiten Pateria Supra, it has been categorically held by this court that under clause 16(8) of the control order 2015, if collector is of the opinion that irregularity warrants prosecution, then he may order the same. In the present case, also no opinion was sought from the collector for launching of the prosecution, and the same has been directed straightway by the SDO, who has hence acted without jurisdiction. In view of the same, the impugn order dated so and so, in so far as they have directed to launching a prosecution against the petitioner, is hereby quashed. And यही ऑर्डर कर देते हैं, इसमें क्या है? same, Let them proceed with it. काय को same pending has रखना है? happened in the present case as well, lordship. भाई मैडम, instead of keeping the matter pending, we'll जी। pass this order, we'll quash the order and we'll direct to proceed according to the provisions. सर वी Lordship. वुड मेक अ हम्बल सबमिशन सर। Yes. जो पहला आदेश दिया गया था दैट वाज ऑन 25th ऑफ तो सितंबर। आप फिर एफिडेविट में पूरा पेश करिए, ऐसे ओरल नहीं बीसी से सुनेंगे. ओके सर। ठीक है. Lordship, my humble submission is in. Then I'll impose cost. If it is not under the provisions, we'll impose heavy cost on you also. जी सर। ठीक है. सर If वी my विल lord, If you my agree, we lordship, can pass this order P3, and if you don't agree, you will be required to file a detailed affidavit, and if the court is not satisfied, we'll impose heavy cost. because if my lordship, if I may submit, nowhere in the impugn order it says that if, as their submission is that oral opinion was sought from the collector. The impugn order is silent on this part. And I'll as pass well. a detailed order if I see that the affidavit is not up to the mark, by सर imposing heavy cost. और नहीं तो आप P3 देख लीजिए, इनको बता दो P3 अगर ये कर रहे हैं तो P3 में ऑर्डर कर देता हूँ. We'll grant liberty to the respondents to proceed in accordance with law. Very well, lordship. My lord, may keep it in at 2:30, my lord. I'll apprise her ठीक of है. the इसको 2:30 के लिए रख देते, let them Lordship, examine it. lordship, ठीक है, इसमें लिख देना श्री आयुष अग्रवाल फॉर द पिटीशन, यही वाला ना, lordship. आयुष अग्रवाल फॉर द पिटीशन. 13 निकाल रहा है. उन्हीं का प्रेजेंट डाल दूंगा. अनुरोध मालपानी में ये आपका श्री अनुरोध मालपानी फॉर द स्टेट लिख देना. द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द पिटीशनर चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 26/10/23 पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 सब डिविजनल ऑफिसर. इट इज द केस ऑफ द पिटीशनर दैट before proceeding for before directing for registration of FIR, the requisite provision spelled out under clause 16 of the MP Public Distribution System Control Order 2015 has not been followed by the authority. It is contended by the petitioner that the opinion of the collector before lodging the prosecution is a prerequisite condition, and therefore
the entire order passed by the authority stands vitiated. उसका लिख देना कि this court has considered clause 16/8 of the control orders 2015, wherein it has been specifically mentioned that if the collector is of the opinion that irregularity warrants prosecution, then he may order the same. In the present case, it is crystal clear that there is no written opinion of the collector, nor the return filed, nor the reply filed by the states reflects that there was any opinion in compliance to the clause 16 of bracket 8 of the control orders 2015, and accordingly, in absence of the same, the impugned order cannot stand and is hereby quashed. It is further directed that since no opinion was sought from the collector for lodging the prosecution, and this prosecution has been straightaway directed by the SDO, order thus is without jurisdiction and is rightly been quashed by this court. In view of the same, so far as the direction to issue ये लॉजिक FIR वाला उसको क्वेश्चन करना मेन ऑर्डर नहीं, इसमें लिखना इन व्यू ऑफ द सेम द इम्प्यून ऑर्डर दोनों ऑर्डर कर देने जो है, एंड दिस इज इन सो फार एज दे हैव डायरेक्टेड टू लॉन्च अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पेटिशनर इज hereby quashed. The respondent shall however be at liberty to proceed against the petitioner afresh in accordance with the law. The petition is accordingly disposed of. Grateful, Lord.